Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kiran Khokhar, back with another video for you guys. First, let me start with a huge thank you to you all because you have shown me so much love on my last two videos and it really means a lot. I would really appreciate if you can show this much love on every video of mine, and that will motivate me to bring you lots of content in the coming week. So let's get started. So topic of today is from the series which is called Brand of the Week. I bring to you brands which I love personally, and these are not sponsored videos. These are my personal favorite brands, and there might be something about them which I have really loved. So this is why I want you to know about them. So without any further delay, let's start with today's brand. So today's brand is an Indian brand which is Ancestry. So what is so special about Ancestry and why it is my favorite? Ancestry जो है, as they say, and इनका नाम ही इतना aesthetically inspiring है. ये brand जो है ये made in India है. So they are trying to bridge the gap where they want to bring clothes for Indian women of today. But still keep the aesthetics of old India. So आपके जो उनके prints देखोगे, silhouettes देखोगे, उसमें कोई झलक होती है जो कि इंडिया के textures से है, इंडिया के aesthetics से है और उसके old heritage से है. But वो उसको उन्होंने customize करके पूरा उसका amalgamation बनाया है, which is for today's Indian women. The second good thing about them is that they are using all the natural fabrics, and this is why they feel so good on skin. और बहुत ही handmade work use हुआ है, इसी वजह से इनका price points थोड़ा high होगा. But they are into sustainable fashion and they are sustainable fashion brand. So this is why their price points are like that. So if you are into sustainable brands and want to invest into ethical clothing, so then you can go for this brand. I have got some outfits from there which I'm gonna show you. Also मैंने इनके कुछ western wear भी try किया था, which I really loved. So I have tried 2 outfits from their western wear collection, and there are 3 Indian outfits which are there. So I'm gonna show you all of them in this video. So without any further delay, let's get started. So जो पहला आउटफिट है वो है ये स्कर्ट और क्रॉप टॉप सेट. बहुत ही कंफर्टेबल है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दैट इसकी स्कर्ट के अंदर पॉकेट्स भी हैं. बहुत फ्लोई आउटफिट है, बहुत ही इजी गोइंग है, and it is really very pretty looking. I personally love the print of it because summerish vibe में है and comfortable on skin है. So you will find them in all sizes available on the brand. And this was the first outfit. Moving on, एक और बहुत ही quirky print में ये dress है, which has really nice sleeves and बहुत ही सुंदर सा इसका structure है. It looks really cute and nice. You can see some pictures also here. How gorgeous it is looking. When I wore it, people gave me so many compliments, and it really looks really cute and chic at the same time. आप चाहो तो इसको shoes के साथ भी pair कर सकते हो, and you can make it look really streetsy. I have belted it up so that waist से थोड़ा सा cinch हो जाए. But if you want, you can let it loose, be flowy, and this could be your vacation outfit. So now I'll talk to you guys about the Indian outfits which I've got from the brand. First outfit is from the collection Gulnaz, which is this kurta. As you can see, it's a very pretty, very today's kind of modern silhouette, which has balloon sleeves, which you see in your crop tops, usual tops, and they have mixed it with lace. And I love how the fabric feels. It also comes with underlining. It is priced somewhere around 3,000 rupees. I'll anyways link all the outfits and mention the prices in the description box. I love its olive shade. बहुत ही compliment करता है मेरे color tone को, and beautiful है. I love something of this kind which has statement sleeves. I have spoken about it so many times in my other videos as well. कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर sleeves में कुछ drama होता है, it looks really कैप्टिवेटिंग एंड आइज को भी बहुत प्लीजिंग लगता है. एंड यू कैन सी कि बहुत सुंदर दिख रहा है इधर. इसको मैंने पेयर किया है गुलनाज कलेक्शन के ट्राउजर्स के साथ, एंड एज यू कैन सी हियर इसका जो बॉटम है वो नेट है, विच इज एम्ब्रॉयडर्ड विद टाइनी फ्लावर्स, जो उसको बहुत ही ग्रेसफुल सा लुक देता है. एंड पेयर्ड इट टुगेदर इन अ लुक, इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल. आई एम इन ऑ ऑफ दिस आउटफिट and this looks really very pretty.
और मैंने इसको स्टाइल किया है सिल्वर ज्वेलरी के साथ. You guys can experiment with gold also, and this could be your any wedding outfit for these days where you just want to go easy. You can wear it on your mehendis. You can also carry it in your best friend's wedding or mehndi functions where you don't want to go overboard and just want to be like really easy going. And if you want to dress it down, जैसे मैंने इसको पेयर किया, आप इसको डेली वेयर में भी पहन सकते हो. The next outfit which I'm talking about is from their summer basic collection. ये भी एक कुर्ती है which is an A line. दोनों चीज़ें मैंने मीडियम साइज में ली हैं. However, I fluctuate. कभी कभार मेरा यूजुअल साइज जो है वो साइज स्मॉल है, बट मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था मीडियम साइज में. दिस इज़ व्हाई आई वेंट फॉर इट. बट इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर योर एक्चुअल साइज बिकॉज उसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट है. सो नेक्स्ट आउटफिट एज आई वाज टॉकिंग अबाउट बहुत ही सूदिंग से स्काई ब्लू शेड में है एंड इसके जो नेक है उसके ऊपर बीड्स की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड गोल्ड वर्क भी है. बहुत समर बेसिक वाइब में आए. इफ़ यू आर कॉलेज गोइंग, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई फॉर. दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2700 रुपीज़ एंड इसके अंदर भी पॉकेट्स हैं which is a really plus point for all the outfits of Ancestry. I really admire the brands who introduce pockets in Indian outfits because that makes it really easier to carry your small basic necessities. So जैसे कि फ़ोन हो गया, कुछ लिपस्टिक हो गई, कुछ भी ऐसे कुछ कैरी करना है तो बहुत ईजी हो जाता है. एंड आई बिलीव दैट्स अ रियली ग्रेट प्लस पॉइंट फॉर एनी ब्रांड जो कि अपने आउटफिट्स के अंदर, स्पेसिफिकली इंडियन आउटफिट्स के अंदर पॉकेट्स डालते हैं. So this is from their summer basic collection. This kurti I have paired it with my personal white pants which are not from Ancestry and ये लोग बहुत ही daily look kind of vibe में हैं. आप इसको बाहर जाके किसी भी ऐसे casual day out पे पहन सकते हो. So this was from their summer basic collection. So the last one which I have got is from their Neera collection. ये भी अनारकली काइंड ऑफ फ्लेयर में कुर्ती है एंड दिस इज़ अ लिटिल ऑन एक्सपेंसिव साइड. इट इज़ फॉर ₹7,000. इस पर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, काइंड ऑफ जरी वर्क है इसके नेक पे. इसकी स्लीव जो है वो ऑर्गेन्जा में है और ये वेडिंग काइंड ऑफ आउटफिट है कि आपके किसी फ्रेंड्स की वेडिंग हो, बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग हो, तो वहाँ पे आप इसको पहन कर जा सकते हो. बहुत ही सुंदर लगेगा. यू कैन सी इट कि मैंने इसको यहाँ पे शरारा पैंट्स के साथ स्टाइल किया है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एंड आई जस्ट लव इट ऑन मी. और ये कलर भी मुझ पर सूट करता है. सो दिस इज़ लाइक इन लाइम ग्रीन शेड. बहुत ही क्यूट सा आउटफिट है. Yes, so that was about this one. So these are the outfits which I have got from Ancestry. I know you guys will be like, you know, इतना expensive range है, but trust you me, worth every penny you invest on it because कुछ outfits ऐसे होते हैं कि आप उस पर पैसा लगाते हो तो आप अच्छे दिखते हो और वो फील गुड कराता है और इट लुक्स रियली गुड ऑन यू. नॉट बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव बट बिकॉज ऑफ द फैब्रिक्स बीइंग यूज्ड, बिकॉज ऑफ द स्टिचिंग, बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग ऑफ द आउटफिट. सो दिस ब्रांड इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड जिस पे आप इन सब चीज़ों के लिए पैसे लगा रहे हो. So if you are okay to spend that kind of money, I guess you must check out Ancestry. The website will be also mentioned in the description box, so you must check it out. That was about today's video and I really appreciate that you have watched it till here. I hope you liked it and it will help you to make a conscious decision in whether you want to buy from Ancestry or not. And इनके stores भी I guess सब जगह available हैं, otherwise they are available online as well. I hope you're subscribed to this channel because I upload weekly videos and I really hope that your notification bell is turned on. Otherwise, how will you get to know that I have uploaded a new video? And my social media links are right here. I upload daily reels and outfits on my social media. I would really appreciate if you come there and connect with me. Thank you for watching and spending your time here. I'll see you in my next video. Bye-bye.